being told that it's safe, but all of your experiential knowledge is telling you that it's not safe. Living with that kind of uncertainty over a long period of time, I think it erodes your... it just erodes a fundamental part of yourself, which is about needing a basic amount of stability and certainty to live. If my political will and my even everyday capacities are eroded to such an extent, there's a kind of rage, and like an existential rage, we could call it, that builds up inside you and that one day explodes, right? हमें ना बोलने की आजादी है, ना हमें जीने की आजादी है, ना हमें कुछ कहने की आजादी है। अगर यही रवैया भारत रखता है तो किसी को ये हक नहीं बनेगा उस टाइम, अगर वो इस टाइम हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी आवाज से आवाज नहीं मिलाएंगे, तो दुनिया को ये हक नहीं कि कश्मीर के आर्म्ड स्ट्रगल को दहशतगर्दी करार दिया जाए, टेररिस्ट करार दिया जाए। हम रेजिस्ट करेंगे अगर हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, अगर हमें सियासी जगह नहीं मिलेगी तो हम आर्म्ड स्ट्रगल शुरू करेंगे। India terrorists! India terrorists! Go India! Go back! Go India! Go back! Freedom! Freedom! Go back! Go back! ये मतलब सही है! ये मतलब सही है! I think that there's so much pressure on Kashmiris to always to display their humanity. I think that their humanity is always questioned. And so the state, or this whatever world we're living in has already labeled them as terrorists, as criminals, as inhumane, as violent. And so they're looking for any sign of that violence or that criminality to then come down really hard on them. हमारा कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है, हम मिलिटराइज यहाँ पर किया गया है। हमारी माओ बहनों के साथ इस्मत रिजी भी रिपोर्ट आ रही है, लोगों ने भी देखी है ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट। उन्होंने कहा है 15,000 से ज्यादा नौजवान लापता है, किसी की टांग टूटी है, किसी का बाजू टूटा हुआ है। हमें टॉर्चर किया जा रहा है, इस तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही है। It's innocent people who are being arrested. A lot of these innocent boys, because one of the things I heard yesterday was, in Saura they've developed these amazing defense systems in the neighborhood. These boys who are basically staying up all night, keeping vigil on the neighborhood so that if police comes, they can kind of blockade the neighborhood so that the police can't get in, because they've been doing these raids at night, right, picking up boys. यहाँ जितने भी एंट्रीज हैं पूरे एरिया में 300 लड़के होते हैं। वहाँ हमको क्या करना है, जब यहाँ क्रश करने की कोशिश करते हैं ये पुलिस, हम करते हैं लाउड स्पीकर्स ऑन करते हैं, लोगों को जगाते हैं हम, क्योंकि फौज आ गए, यहाँ से घरों से बाहर आओ, ताकि ये अंदर नहीं घुसने देंगे। क्योंकि यहाँ कितने भी लड़के उन्होंने उठाया, लेकिन उन्होंने बहुत ही सारे लड़के को PSA में लगाया, पता नहीं है कहाँ के किन किन जेलों में बंद हैं। But because the police couldn't get into Saura, because the system was pretty effective, they went to Baspura and picked up a bunch of other boys. And that's just to spread a kind of fear among... It's not in the name of efficiency that we're actually kind of stopping criminality. It's purely to send a message of fear that it doesn't matter if you're innocent or you're guilty, but anybody can be picked up, because anybody is like a potential criminal. On the other hand, I would say that living in these kinds of conditions has also built up people's capacities, their resilience, in an amazing way. हम बाहर के हैं, थोड़ा मुश्किल होती है। 30-40 दिन से स्कूल बंद हैं, फिर मस्जिद वालों ने बोला था इधर बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। हम 10 दिन से इधर आ रहे हैं, राशन देके, जैसे राशन, कोई चावल, कोई ये,
काम बिल्कुल ठप है सारा। इन्होंने मदद की मस्जिद वालों ने थोड़ी बहुत, तो हम गुजारा कर रहे हैं अपना बस। You see the ways in which communities are able to galvanize instantly. Anytime there is a kind of siege that happens, people know how to live under these siege-like conditions, whether it's finding ways of distributing food or milk, or like distributing money through, Baitul Mals and other mosque kind of community organizations. The restraint that Kashmiris have learned to exercise, the patience, the forbearance, not to let the situation get the best of you, but to kind of wait and to bear it over a long period of time. And I think that's like a mark of strength